Hello everyone. Our today's topic is bipolar disorder, manic depressive disorder, and it's a topic of clinical psychology. So let's study further. What is bipolar disorder or manic depressive disorder? जैसे आप इसका नाम देख सकते हैं. You can see the name bipolar. Bi means two, polar which has two sides. So take the example of a rod. एक rod जिसके दो sides हैं. One side that is a one phase that is manic phase. Another phase, another side is a depressive phase. So these are two phases. And at center there's a normal phase. एक तरफ energy levels are very high, abnormally high. दूसरी तरफ energy level are abnormally low. There's a sad phase. So it is also known as bipolar affective disorder or manic depression. Manic, yeah, manic depressive insanity. This word was introduced by Kraepelin in 1899. ये एक psychiatric diagnosis है, which falls under the category of mood disorder according to ICD-10. Presence of one or more episodes of abnormally elevated energy level, cognition, and mood with or without one or more depressive episodes. So जहां पर ये पाया गया कि in this particular disorder that at one side जो एनर्जी लेवल है बहुत abnormally elevated है, cognition is such that a person thinks कि वो एक वक्त तक बहुत कुछ कर सकता है. Another side depressive episodes है, highly low energies है. So this elevated mood is clinically referred as mania or milder hypomania. So जो elevated mood रहता है, जो high energy level रहता है, उसे mania या milder hypomania कहते हैं. Experiencing depressive episodes or mixed episodes of both mania and depression at the same time. So person may feel या तो highly elevated energy that is mania or low energy depression at the same time. There may be and in the at the center या फिर बीच में एक फेज होता है जो कि नॉर्मल मूड होता है. एपिसोड्स आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड where a person is perfectly fine. There is no mood disorder. So that means there are two phases, and at center there is a normal phase. According to ICD-10, that's International Classification of Diseases, 10th edition, उसमें पाया गया है कि F30 से F39 उसमें mood disorder की जो category है, this bipolar disorder falls under this category. So you can see here F30, which is manic episodes, which has symptoms of hypomania, mania with psychotic symptoms, mania without psychotic symptoms. So that means ये वो level है जहां पर when a person has this manic episode, that high level of energy, जहां पे psychotic symptoms हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. Psychotic symptoms, that means hallucination and delusion. So like this, there are certain further episodes. Let's look at depressive episode. That is mild depressive episodes, moderate depressive episode, severe depressive episodes without psychotic symptoms, severe depressive episode with psychotic symptoms. Again, here also there may be psychotic or not. There may not be psychotic symptoms. So it is still F39. I mentioned just few of them here to have an idea. Now, what are the symptoms? कई बार ये मान लिया जाता है कि that with these psychotic disorder की वजह से कि एक patient has schizophrenia, but actually कई बार वो wrongly diagnosed होता है because of the psychotic disorder, delusion and hallucination. But let's see, look at the symptoms. इसके जो symptoms क्या है? Manic, depressive, mixed, if experience only one, that is unipolar disorder, if cycle of alternates between experience of mania is said to be bipolar. So that means जब diagnosis हो तो properly check कर लेना चाहिए कि how it is different from schizophrenia, as both have psychotic disorders and symptoms.
सो एक सिंपल मीनिंग ले लेते हैं बाइपोलर का. सो बाइपोलर इज अ कंडीशन वेयर वन experiences abnormally elevated manic or hypomanic or abnormally depressed states for periods of time in a way that interfere with functioning. दैट मीन्स एक वक्त पर abnormally highly elevated एनर्जी है, दूसरे वक्त पर बहुत लो एनर्जी है, डिप्रेस स्टेट है, और जो कि एक दिनचर्या डे टू डे की जो फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेयर करता है और इफेक्ट करता है. नाउ लेट्स लुक एट द डिप्रेसिव एपिसोड. जो सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स आ जाएंगे. वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड मूड है, साइकोमोटर रिटार्डेडनेस है, देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, व्यक्ति नेगेटिव सोचे जा रहा है, गिल्ट की फीलिंग है या कोई और नेगेटिव फीलिंग्स हैं, स्लीप डिसऑर्डर है, प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, डिल्यूजन है, हेल्यूसिनेशन है, साइकोटिक, दैट इज इन डिप्रेशन दैट इज नोन एज साइकोटिक डिप्रेशन. सो देयर मे बी और देयर मे नॉट बी. सैड, टू मच ऑफ सैडनेस है, एंगर है, आइसोलेशन है, अकेले पेशेंट रह रहा है, अकेले रहना उसे पसंद है, ही और शी इज नॉट डजंट फील लाइक कनेक्टिंग विद पीपल, होपलेसनेस की फीलिंग है, थकान है, किसी को काम कर कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जो भी एक्टिविटीज जो पहले पेशेंट एंजॉय करता था उसमें जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस है, लोगों से दूर रहता है, बातें नहीं करता, उनसे बात नहीं करता, या फिर सोशल एंजाइटी है, लैक ऑफ मोटिवेशन है. सो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड. देन मैनिक एपिसोड्स that features, that means your energy level are very high, experience unusually high excited irritated mood for at least a week, show at least three of the following symptoms. ओवरली वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या फिर उसका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव है, इम्पल्सिव है, छोटी छोटी चीजों पर वो रिएक्ट करने लगा है जो कि इतनी रिएक्शन वाली चीजें नहीं थी, बट दिस टू मच ऑफ रिएक्शन. स्लीप कम हो गई है, हाई रिस्क एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगा है, इतने सारे थॉट्स हैं, रेसिंग थॉट्स हैं, आ रहे हैं, वो he starts और she starts speaking more, बातें बहुत ज्यादा करने लगा है, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो पेशेंट हो रहा है, बहुत एक्टिव है, बहुत फोकस्ड है. समटाइम्स इफ दे ड्रेस अप इन अ वेरी वियर्ड वे, कलरफुल ड्रेसेस हैं, उन्हें लगता है कि वो एक स्पेशल मिशन पर है. सब्सटेंस अब्यूज, लैक ऑफ इंसाइट, लो एस्टीम. सो दिस फॉल्स अंडर मैनिक एपिसोड्स. नाउ अनदर इज हाइपोमैनिक एपिसोड्स. तो हाइपोमैनिक एपिसोड्स क्या है? ये माइल्ड फॉर्म है मेनिया का, दैट लास्ट 4 days. अनयूजुअल मूड है, मूड डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा बात करता है, इन स्लीप ज्यादा नहीं आती बिकॉज इतना एनर्जी लेवल हाई होने की वजह से स्लीप नहीं आती है. सो इट इज अनलाइक फुल मेनिया. सो इट्स अ वेरी माइल्ड फॉर्म, इट डजंट इंटरफेयर विद डेली लाइफ. डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन नहीं है. ना मिक्स्ड एपिसोड्स जैसे बोथ फॉल एट द सेम टाइम, फील एनर्जेटिक, व्यक्ति एक टाइम पे बहुत एनर्जेटिक है, दूसरे वक्त पर वो दुखी है, सैड है, रोने लग जाता है. So one third are like this, and in such the people have suicidal thoughts also. The classification of bipolar disorder. Spectrum disorder occurs on a continuum. According to DSM-5, bipolar disorder is a category that includes three main diagnoses: bipolar 1, bipolar 2, and cyclothymic disorder. So ये तीन sub types हैं. Bipolar 1 is a very severe disorder. It's a manic depressive disorder that includes psychotic episodes that may or that may not have psychotic episode. That means it's a delusion and or hallucination हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. That lasts for at least 7 days. और अगर severe है तो hospitalization and medication has to be started as early possible. A person with bipolar 1 may experience a major depressive episode that lasts at least 2 weeks. Bipolar 2, जो कि जिसकी severity कम होती है, is a condition that includes alternating manic and depressive episodes that are usually less severe than those of bipolar 1. See, less severe है. Manic episodes in bipolar 2 are called hypomania. और लोगों को लगता है वो जो उनका बिहेवियर हो erratic है, नॉर्मल लोगों से उन्हें अलग दिखता है, बिकॉज दैट्स मूड डिसऑर्डर एंड द बिहेवियर पैटर्न है. देन साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, ये माइल्डर फॉर्म है बाइपोलर का, a cyclic disorder that includes brief episodes of hypomania and depression that last least at least like 2 years in adult and 1 year in children. Now bipolar 1
डिसऑर्डर का हम एक यहाँ पे केस स्टडी ले लेते हैं। जेन, जिसकी एज 28 है। सो लेट्स लुक एट द सिम्टम। मैनिक एपिसोड के क्या है? जेन एक्सपीरियंस मैनिक एपिसोड्स लास्टिंग 2 मंथ्स। 2 महीने से उसे मैनिक एपिसोड्स हैं। दैट मीन्स उसका बहुत मूड एलिवेटेड रहता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, वो एकदम से रिएक्ट करने लग जाती है। वह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम उसे हैंडल करती है, उसे लगता है वो कर सकती है। एंड दैट उसे इवन she feel as if she has power to accomplish anything in life, and she has trouble sleeping. उसे सोने में कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल इतने ज्यादा है कि वो she could not sleep well. डिप्रेसिव एपिसोड्स में क्या आता है? दैट इज फॉलोइंग आफ्टर दैट मैनिक एपिसोड्स के बाद आ गया डिप्रेसिव एपिसोड, जहाँ पर लास्टिंग 3 मंथ्स, जहाँ पर शी फील्स वेरी सैड, होपलेस फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, वर्थलेसनेस की फीलिंग है, उसे थकान है, जैसे लाइक इट्स टू मच ऑफ फीलिंग, स्ट्रगलिंग विद सीवियर फटीग। जो एक्टिविटीज वो अक्सर एंजॉय किया करती थी, अब उसे वो और एंजॉय ज्यादा एंजॉय नहीं करती है। इन एक्ट शी हैज लॉस्ट द इंटरेस्ट इन दोज एक्टिविटीज। इवन शी फील वेरी डिफिकल्टी गेटिंग आउट ऑफ हर बेड एंड डूइंग डे टू डे एक्टिविटीज। So it is diagnosis में पाया गया कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंड जेन वॉज प्रिस्क्राइब्ड मूड स्टेबलाइजर, एंड फर्दर उसे थेरेपीज के लिए कहा गया ताकि उसके दैट एक सो दैट शी कैन डेवलप सर्टेन कोपिंग स्ट्रेटजीज। ना व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बाइपोलर? क्या रीजन है कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स है एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर है। बहुत सारी चीजें मूड डिसऑर्डर फैमिली से जीन्स में आ जाते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। साइकोनाटिकल, इंडिविजुअल साइको सोशल वेरिएबल्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, एब्यूसिव एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड, अर्ली एक्सपीरियंस ऑफ एडवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पर इमोशंस सप्रेस्ड हैं वो प्रॉपरली, और बच्चे ने किसी ने चाइल्डहुड में एब्यूसिव एक्सपीरियंस फेस किया हो, ट्रॉमा हो, बहुत सारे इमोशंस अंदर सप्रेस रह गए हों, और बहुत सी चीजें प्रोसेस नहीं हो प्रॉपरली की हों। इन रिलेशनशिप ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत थ्रेटनिंग रहा है, डेंजरस रहा है, और यू कैन से लाइक सेफ फीलिंग नहीं हुई है बच्चे को, बहुत ही टाइट रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो देयर मे बी चांसेस कि आगे आकर वो शेप ले सकता है दिस डिसऑर्डर का। यहाँ पर yeah, here you can say family risk है, biological factor में twin study, genetic study, brain study, neurotransmitter, endocrine system, melatonin receptor. So these all shows कि that जिसमें bipolar के chances हो सकते हैं। यहाँ पे we can take that फिर endocrine symptoms में function में कि if somebody has hypothyroid, so that disease that can also lead to depression and changes in hormonal level, and further we can also see that neurotransmitter, they are responsible for the chemical changes in the brain. अगर हम सेरोटोनिन की कमी देखें उसकी वजह से मूड रेगुलेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सीवियर disorder, अगर वो सीवियर है तो immediately it is they are to be hospitalized and medication has to be started. Now let's look at the treatment. Yeah, as I mentioned, hospital has to be there, medication, mood stabilizer medication, lithium, valproic acid, which is the substitute of lithium. Other medicines are there, antidepressants are there, mood stabilizers are there, then antipsychotic disorder, psychotic medicines are there, and along with medication, therapy is really, really required. The various therapies are there. It may take long time with medication. There are various therapies, CBT, cognitive behavior therapy, also interpersonal therapies are there. There are certain therapies where one work at taking the person to the childhood, or where the things have started, where the trauma started. So various therapies or psychoeducation. So these all
that is all about bipolar. So it's very important when it is diagnosed, it's very important to start with a medication and a therapy session. That's all. Thank you so much. Stay happy, stay healthy.